हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीषा दुबे एंड थैंक्स फॉर क्लिकिंग। आज हम बात करने वाले हैं डिफ़िकल्टी की। अगर कोई काम आपको मुश्किल लगता है तो आप क्या बोलते हैं? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डील, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। देयर आर सो मेनी एरियाज वेयर वी यूज़ डिफ़िकल्ट और डिफ़िकल्टी, हम उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आज का हमारा लेसन इसी पे डिपेंड करता है। तो let's learn. My first example is tough. Tough means it is very common word. We all know about it. Tough मतलब मुश्किल. But what is the exact meaning? Tough means difficult to endure और full of suffering. अगर कोई ऐसा कुछ भी हो सकता है जो tough है, वो tough कैसा है? It is difficult to endure और it is full of suffering. That time you can use tough. Tough decision, tough task, tough assignment, tough battle, tough choice, इस तरीके से. Now moving on to next example, and that is harsh. Harsh again describes difficulty or difficult. It means difficult to live in. You can also use for action, words, sound, light, etc. जब कोई चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगती है, जिसके साथ जीना मुश्किल लगता है, जिसके साथ जो सुनना मुश्किल लगता है, जो कोई एक्शन आपको मुश्किल लगता है, दैट टाइम यू कैन यूज़ हार्श. यू नो द हार्श एनवायरनमेंट ऑफ डेजर्ट, हार्श लाइट, हार्श साउंड, इस तरीके से. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज ट्रिकी. ट्रिकी मीन्स अगेन इट डिस्क्राइब्स डिफिकल्ट टू डील विद इट. ऐसी चीज जिसके साथ आपको डील करना मुश्किल लगता है, दैट टाइम यू कैन यूज ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी सिचुएशन, ट्रिकी टास्क. सो दैट टाइम यू कैन यूज ट्रिकी. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज ऑनरस. इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब when you dislike something or you worry about it, and and that's why it is very difficult to deal with it. That time you can say it is onerous job, onerous responsibility. Means you dislike and you worry about it. Now moving on to next example, and that is demanding. Demanding also describes difficulty or difficult. When something needs a lot of effort, care or skill, so that time you can use demanding. जब ऐसी कोई चीज़ जिसमें आपको बहुत एफर्ट की ज़रूरत है, बहुत केयर और स्किल की ज़रूरत है, so that time you can use demanding. It's demanding job, it's demanding schedule. Moving on to next example, that is daunting. Daunting, it is scary in its difficulty. कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है और उसके साथ साथ वो स्कैरी भी है, जिससे आपको डर लगता है. इंस्पायरिंग फियर, जो थोड़ा फियर क्रिएट करता है आपके अंदर. सो दैट टाइम यू कैन से डॉन्टिंग. समथिंग विच मेक्स यू वरीड बिकॉज इट इज़ वेरी डेंजरस टू डू. हम बोलते हैं ना डॉन्टिंग चैलेंज, डॉन्टिंग टास्क, जो आपको क्या करता है, जो आपको इट मेक्स यू स्केयर, जो आपको क्या करता है, इट मेक्स यू स्केर्ड, इट इज वेरी स्कैरी. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज चैलेंजिंग. चैलेंजिंग इज ऑल्सो डिफिकल्ट बट स्टिल इट इज इंटरेस्टिंग एंड इंजॉयबल, जिसको करने में मजा आता है. इट इज डिफिकल्ट बट स्टिल यू आर एंजॉइंग इट, सो दैट टाइम यू कैन से चैलेंजिंग. It's challenging and rewarding job, challenging puzzle, challenging game, जिसमें आपको करने में मज़ा भी आ रहा है, and it is difficult also. Next example is complicated. Complicated is something which is difficult to explain, analyze or understand. So that time you can use complicated. It is difficult. Complicated emotions, complicated work, complicated task, जिसको करने में, समझने में, जानने में, अंडरस्टैंड करने में मुश्किल आती है, दैट इज कॉम्प्लिकेटेड. प्रॉब्लमेटिक, समथिंग विच कॉजेस प्रॉब्लम, उसको हम बोलेंगे जो
प्रॉब्लम क्रिएट करता है. एंड सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. इट इज़ ऑल्सो यू कैन यूज फॉर डिफिकल्ट और डिफिकल्टी. नो, प्रॉब्लमेटिक लाइफ और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. So you can also use problematic for difficulty or difficult. Next example is sweaty. Sweat is something which causes sweat, but here we are not talking about sweat. It is sweaty means it needs or it requires lot of physical effort. So you can say sweaty. It's a sweaty task because it needs lot of effort, physical effort. So that time you can use sweaty, and it is also difficult. Now moving on to next example, that is hard. Hard is something difficult to accomplish or complete. कोई चीज़ है जिसको complete करना बहुत मुश्किल है और बहुत hard है. So that time you can say hard. Difficult to accomplish or complete. Hard life, hard question, hard problem, इस तरीके से. So these are the example you can use for difficult or difficulty, and I hope you will use in your daily life. If you like the lesson, please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.